It has been 3 days since violence broke out in Nu, and since then tensions have been simmering across districts in Haryana, especially in Gurugram. At this point in time, I am reporting from Bashapur area of Gurugram, where there were a few reports had come up that a few shops were set on fire. Fearing the hate, fearing the anger, many people have vacated their houses, as you can see in these visuals right here, that people who were living in these houses, these people were basically from the Muslim communities, and we saw that the manner in which Muslims were targeted out here, especially in Gurugram, and hence all these people have locked their houses and have gone away from here. What the other locals who have been residing in this area have told us is that there were no tensions that developed over here on the ground, but yes, these people had shops in the main market, and hence they feared that the situation could go out of hand and they could also be targeted, and hence all these people have vacated their houses and in fact have put these locks right in front of their houses. It has been 3 days. The police has constantly been saying that the situation is back to normal, but yes, there is a lot of tension, there is a lot of fear that can still be sensed in the atmosphere out here in Bashapur. The police is saying that yes, they are taking preventive measures. Adequate booths are deployed on the ground just to make sure that the law and order situation remains under control. Over the last 12 to 14 hours, there has been no new instances that have been reported of any sort of violence. But yes, people are still living under fear that yes, the riots could break out, as there still is a lot of anger and a lot of tension in this entire area. The situation in Gurugram has been normal over the last few days. There has been no reports of any sort of communal clash that might have broken out over here. But yes, there are instances where shops have been set on fire of a specific community. And that is the reason why Section 144 has been imposed in this entire area, and flag marches like these are being carried out across Gurugram at this point in time. Because remember, currently at the spot at which I am standing, this is the Bashapur area in which we saw instance of firing happening, which eventually inflated the situation in this entire area, and hence the confidence of locals who are residing in this area has definitely gone down. These flag marches are being conducted just to make sure that the people who are affected by these, the fear that is still amongst the people, that fear is taken away, and it is proved that the police and the administration is on the roads, making sure that safety and security is provided to them. Till this point, the investigation is ongoing in the violence that broke out in Nu. At least 139 people have already been arrested, 45 FIRs have been registered. Several special investigations team has been made by the Haryana police just to make sure that the law and order situation remains under control, and also the perpetrators of the rioting that happened in Nu, these perpetrators are brought to the books at the earliest. लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? हम लोग झांसी जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कहाँ काम करते थे आप? यहाँ नहीं हूँ, मैं करते थे। तो अब क्यों झांसी जा रहे हैं? यहाँ कुछ दंगा हो गया है, जिसकी वजह से ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है, बाजार बंद है, राशन पानी कुछ है नहीं। अच्छा, तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे बताइए? तो झांसी में वैसे काम वगैरह मिलेगा क्या? उसका क्या करेंगे यहाँ लेके, क्या करेंगे बताइए आप? जी हाँ। तो कहाँ से चल के आ रहे हैं? हम अभी न्यूज़ से चल के आ रहे हैं। अच्छा, और कहाँ कैसे जाएंगे? अब पैदल जा रहे हैं, कुछ साधन चल नहीं रहा है, इसलिए पैदल ही जा रहे हैं। अच्छा, तो पूरा परिवार है आपके? हाँ, पूरा परिवार है। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग इतना पूरा सारा जनता दिख रहा है, देखो। सब जाएंगे? हाँ, सब आप लोग काम की तलाश में? हाँ, काम की तलाश में जा रहे हैं। अच्छा, और वैसे यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ सब लेबर का काम करते थे। लेबर का काम? हाँ। तो जो बस्ती में आप लोग रहते थे, वहाँ लगभग कितने लोग रहते हैं इस तरह के लेबर कम से करीब 500 लोग रहते थे। 500 लोग रहते हैं। हाँ। कितने लोग अभी जा चुके हैं नू छोड़ के? बहुत सारे निकल गए, जो बचे थे 300-400 लोग अभी जा रहे हैं। 300-400 लोग जा चुके हैं? और जा चुके हैं, आज सारे जा रहे हैं अभी। आज सारे जा रहे हैं? हाँ। तो ज्यादातर लोग कहाँ जा रहे हैं? किस एरिया में काम तलाशने जा रहे हैं? अब जा रहे हैं झांसी साइड में जा रहे हैं, जहाँ मिलेगा। हाँ, जहाँ भी काम मिलेगा वहाँ जा रहे हैं। और जो आपके कॉन्ट्रैक्टर थे या जिन्होंने काम दिलाया था, उन्होंने बोला है आप लोग चले जाएं, यहाँ काम नहीं? किसी ने कुछ बोला नहीं है, ना फोन उठा रहा है, फोन बंद है। अच्छा। ना कहीं फोन लग रहा है, इसलिए जा रहे हैं। अभी जाने की क्या वजह है इस समय? क्या ये वजह है साहब के काम वाम लग नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, इसलिए जा रहे हैं पैदल। क्या करें, कोई साधन है नहीं निकल जाने के लिए। तो काम ढूंढेंगे आप लोग, और क्या कैसे काम कहाँ मिलेगा? अब काम सर अब क्या ढूंढे, गांव जा रहे हैं, क्या यहाँ काम लग नहीं रहा है इस दंगे की वजह से। बैठे पड़े थे, हमने क्या करें, अब गाँव चल जाते हैं। कैसे जाएंगे अभी, क्या साधन मिलेगा? पैदल जाएंगे साहब। अच्छा, वहाँ तक नूह तक वहाँ तक जाएंगे, पलवल तक पैदल जाएंगे। हाँ जी। उसके बाद कोई साधन अगर अब साधन मिल जाएगा तो चल जाएंगे साधन से। आप लोग भी सर यहाँ लेबर का ही काम कर रहे हैं? हाँ, लेबर का। और कब से ये यहाँ पे दिक्कत आई है काम वगैरह की? 2-3 दिन के। अच्छा, तो 2-3 दिन से कोई कमाई नहीं हुई? ना हुई।
बैठी है बस फालतू बैठी, पैसा मिल नहीं है, ठेकेदार भाग गए, पैसा तो कोई दे नहीं आया, खाएंगे क्या। अच्छा। और घर में कौन कौन है परिवार में? सब है ना, बच्चे गाँव पे छोड़े। अच्छा। कुछ साथ में लिए हैं। तो अभी सब लोग जो है निकल गए? हाँ निकल गए। लगभग कितने कितने लोग आप लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पे? 40-50 आदमी होंगे एक साथ जो जा रहे हैं? हाँ। और जहाँ आप लोग पीछे रहते हैं वहाँ लगभग कितने लेबरर रहते हैं साथ में? और भी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ आ रहे बाद में आएंगे। कुछ लोग ऑलरेडी जा भी चुके हैं छोड़ के? हाँ कुछ लोग चले गए, कुछ जाएंगे, अभी जाएंगे, आज जाएंगे या कल जाएंगे। भाई साहब आप लोग कहाँ के लिए निकले हैं अभी? झांसी जाने के लिए। अच्छा, क्या वजह रही छोड़ के? अरे साहब यहाँ काम नहीं लगा, दंगा हो गया, आदमी धमका रहे। अच्छा। इस वजह से राशन पानी नहीं मिल रहा। आप लोगों को धमकाया भी है? जाने के लिए बोला है? हाँ। लोकल लोगों ने? हाँ। अच्छा, तो अभी कहाँ काम की तलाश में जाएंगे? अब तो गांव जा रहे हैं साहब। गांव जा रहे हैं? कहाँ पे? पलवल से अपने झांसी जाएंगे। झांसी जाएंगे? हाँ, तो झांसी। काम वगैरह यहाँ कब से बंद है? तीन दिन से। Those who have lost their lives and those who were injured in the riots in Nu, the worst hit people are the daily wage laborers. You can see as hundreds of them are fleeing Nu right now because they've been claiming that for the past 3 days since curfew has been imposed, they have no work, there have been no earnings for them, and they have also been threatened by locals to leave the area following the communal tension. Many of them belong to Jhansi and Rajasthan, and they are leaving Nu for Palwal, from where they can probably get some basis of commuting to Rajasthan so that they can live a normal life. They have uncertainty looming over their future, and that is the reason why they are leaving this place, this district, to go to another state in search of work. Their contractors have been missing, they have not been taking calls, the internet in the district is shut, and therefore they are leaving this place in search for work. Now, as uncertainty looms over their coming days and over their future and the future of the kids that they have with them, more than 500 or 600 of them who lived in New have already left the district, while others are preparing to leave. Only in time to come we'll see if the district administration takes some measures to make their lives normal and ask them to come back for working in New.